हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे जूनियर टीचर आसी इंग्लिश मैथ ओडिया और ईवीएस रो केते गुड़िए एमसीक्यू पेडागोजी एमसीक्यू क्वेश्चन करबा जहाँकि अपकमिंग असिस्टेंट टीचर पई हेल्पफुल रहिबो। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ए लर्नर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर जीची एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट ताको क्योंटा कहता है इंडक्टिव मेथड, सिंथेटिक मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक मेथड। डिडक्टिव मेथड नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य क्योंटी अनुभूति लब्ध शिक्षण चक्रर अंतिम पर्याय अटे? प्रयोग करिबा, अनुभव करिबा, प्रक्रियाकरण करिबा, प्रकाश करिबा। प्रयोग करिबा नेक्स्ट व्हिच एम ऑफ मैथमेटिक्स patents to develop individual to take up specialized courses having application of mathematics, engineering, accounting, banking, etc. Cultural aim, social aim, vocational aim, moral aim. Vocational aim. Next, mathematics is the study of structure, and the word structure means what? Arrangement, composition, configuration, all of them. Next, which of the following are the purpose of question bank? A tool for evaluation. It is useful to prepare a test for instant testing of the learners. The learners can also self-evaluate themselves by using the question bank. Both 1 and 2 ठीक है। नेक्स्ट एज पर ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कम अंडर द इफेक्टिव डोमेन बाय कार्थोल्ड ब्लूम मेसिया 1973 एप्लीकेशन एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रिहेंशन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट which of the following is a correct regarding the enrichment activities in mathematics? गणित क्षेत्र में एनरिचमेंट बा समृद्धिकरण पाई क्योंटा ठीक होलिछे? द एक्टिविटीज इन्वॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग ठीक अछि। एज फॉर द पॉसिबल ओपन एंडेड इज मे बी गिवन ए एनरिच एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट बोथ ठीक अछि। बोथ एक एंड दुई ठीक। नेक्स्ट in the context of role of teacher in the constructivist approach of teaching learning mathematics, which among the following first stressed on the importance of the social setting? C.R. Rogers, Carl Rogers, महात्मा गांधी, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे नहीं लेव वाइगोत्स्की कि कहते लेव वाइगोत्स्की। सोशल कल्चरल संकरे आसिले कौन हो लेफ्ट वाइगोत्स्की। नेक्स्ट साथी मूल्यांकन क्यों लाभदायक? यह विद्यार्थी मानक सेमानक कार्य उपरे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करे। यह शिक्षकों कार्यभार ह्रास करे। यह अन्य कौन मूल्यांकन आवश्यकता को समाप्त करथाए। यह हालुका ग्रेडिंग पाई अनुमति दिए। यह विद्यार्थी मानक सेमानक कार्य उपरे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करे। नेक्स्ट one of the main aims of teaching science at the upper primary stage is to develop the skill to argue against scientific theories, the ability to pass exam, mastery over scientific jargon, a scientific temper. Next, गठनमूलक आभिमुख्य क्या उपरे अधिक निर्भर करे? शिक्षकों ज्ञान, परामर्शिता, पाठ्यपुस्तक, मानकीकृत परीक्षा, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान। गठनमूलक मूल्यांकन कौन पे करे? विद्यार्थी पूर्व ज्ञान आकलन करने। नेक्स्ट ब्लूम्स टेक्सोनोमी रे क्यों डोमेन मन रखा, चिंता करने और समस्या समाधान करने भली कार्यकलाप को
ଭୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡୋମେନ୍, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ଆନାଲିଟିକ୍ ଡୋମେନ୍, ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ଜ୍ଞାନଗତ ଡୋମେନ୍। ନେକ୍ସଟ, when a student learns through trial and error and eventually arrives at a solution, it is an example of the lecture method, direct teaching method, problem solving method, observation method. Problem solving method. Next, the primary goals of teaching science at the upper primary stage is to ensure students can recite scientific definition, foster a deeper understanding of scientific concept, prepare students for competitive exams, encourage rote learning. Primary goal of teaching science of upper primary stage, उच्च प्राथमिक स्तर रे साइंस विज्ञान क्षेत्र रे कौन प्राथमिक गोल रहिबा उचित? Foster a deeper understanding of scientific concept. Next, a tool that assess both the process and the product of student work is short answer test, portfolio, objective test, multiple choice test. Portfolio. Next, what does the acronym CBA stand for in the context of science assessment? CBA रो फुल फॉर्म कोन बोलछे एटी? Curriculum based assessment. Next, वैज्ञानिक अनुसंधान रे पर्यवेक्षण काहेकि गुरुत्वपूर्ण अटे? यह परीक्षणर आवश्यकता को शेष करे, यह विद्यार्थी मानकर विज्ञान को कम आकर्षणीय करे, यह अनुमान करबा एवं निष्कर्ष बाहर करबा पई व्यवहार करा जाई पारुथबा तथ्य प्रदान करे, यह वैज्ञानिक मानकु अमूलक अनुमान करबा पई अनुमति दिए, यह अनुमान करबा एवं निष्कर्ष बाहर करबा पई व्यवहार करा जाउथबा तथ्य प्रदान करे। नेक्स्ट, which technique use involves evaluating students' ability to apply scientific knowledge and skill to solve real world problems? Flashcard, multiple choice test, science projects, homework assignment. Science project. Next, what is the main objective of teaching the nature of science at the upper primary level? upper primary उच्च प्राथमिक विद्यालय रे मेन ऑब्जेक्टिव कौन रही बोलछे नेचर ऑफ साइंस क्षेत्र रे? टू अंडरस्टैंड हाउ साइंस वर्क्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स, टू एवॉइड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, टू मेमोराइज साइंटिफिक फैक्ट्स, टू इंस्टिल ए फियर of science, to understand how science works and its principles. Next, in integrated education, what does the acronym ELA usually present? ELA रो full form पचरे थी, English language arts. Next, in an integrated approach, what does the acronym PLTW typically stand for? PLTW रो full form पचरे, project lead the way. Next, what does the acronym POE represented in the context of observation method? Observation method रे POE रो full form कोन अछि? Predict, observe, explain. Next, what is the significance of teaching ethics and value in the context of science education? It promotes scientific dishonesty, it encourages responsible and ethical scientific practice, it slowly focuses on exam results, it has no
relevant to science education. It encourages responsible and ethical scientific practice. Next, तो यह थिला जूनियर टीचर आसीथिबा EVS मैथ इंग्लिश ओ ओडिया रो पेडागोजी क्वेश्चन. थैंक यू.